Hello everyone and welcome to Dermatology Online with me, Dr. Wagma. As you all know, you leave comment messages and emails and we talk from there, but I have noticed so many people putting comments on my different videos asking about vitiligo. So I thought, why not just talk about it so they'll also know. So I choose vitiligo to talk about it today. Okay, what is vitiligo? Vitiligo is a disease that causes skin color. It causes skin to lose color in patches. It can, these patches grow bigger with time. It can affect the skin on any part of the body. Even your hair. It affects your hair and the skin inside the tissue, the lining of the tissue inside your mouth also. It happens, that the color that we determine skin ka color hai, it's called, the skin color is called melanin. So when the cells that produce melanin, they stop functioning or they die, we don't know why it happens, but when it happens, then we lose melanin. It can affect any skin color, but it's mostly obvious in darker skin type. As such, it's not life-threatening or contagious, but it can, people can get social anxiety and stress. What causes vitiligo? Vitiligo occurs when the color producing cells, melanocytes, they die or they stop functioning for some reason. So the pigment, that is melanin, that is responsible for the color of your hair, skin and your eye, it's not getting produced. We exactly don't know the factors that why does it happen or क्यों होता है, but there are factors जिसके हम उसको relate करते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से ये हुआ हो. Like जैसे कि hereditary हो, आपके family में चला आ रहा है तो you will get it. ठीक है, if your immune system get affected, कोई autoimmune disease हो, ठीक है, और like you have stressful events like trigger किया हो किसी चीज़ ने, like stressful event, किसी chemicals के साथ, you get in touch with chemicals that remove the color of your skin, like different factor, like severe sunburn हो गया हो तो हमें लगता है कि ये चीज़ें शायद इसको trigger करती है. So how will you know what are the symptoms that you got vitiligo? So you see patchy loss of skin color, that usually first appear on your hand, your face, or the area, the area around the body openings and your genitals. You see premature whitening and graying of the hair on the scalp, आपके eyebrows में, आपके eyelashes में, आपके beard में. You also see loss of color in the lining of your mouth and your nose, like mucous membrane, जो tissues आपके मुंह और नोज की लाइनिंग करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसमें भी डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है. इट कैन हैपन किसी भी एज वक्त शुरू हो सकता है, बट मोस्टली इट हैपन्स बिफोर द एज ऑफ 30. People with vitiligo are at great risk of social and psychological stress. सनबर्न ईजिली हो जाते हैं, आई प्रॉब्लम होती है, हियरिंग प्रॉब्लम होती है. Now it depends कि आपका कौन सा skin surface involved है. There are different kinds of it which is classified according to the जो discoloration है on your body. So we have generalized vitiligo. उसमें क्या होता है, the discolored patches progress similarly on the corresponding body side, and ये सबसे common वाला भी है. देन हमारे पास है यूनिवर्सल विटिलिगो. उसमें ऑलमोस्ट पूरे स्किन सर्फेसेस का इन्वॉल्व होता है, पूरा स्किन सर्फेसेस बॉडी का इन्वॉल्व होगा. फिर वी हैव सेगमेंटल. सो जैसे नाम बता रहा है, ओनली वन और एक पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगा. सेगमेंटल ये यंगर एज में होता है, ये शुरू होता है 1-2 साल चलता है और फिर खुद ही स्टॉप हो जाता है. देन वी हैव फोकल, जिसमें वन पार्ट और फ्यू एरियाज इफेक्टेड होते हैं, तो फोकल विटिलिगो है. एंड वी हैव एक्रोफेशियल विटिलिगो, जिसमें डिस्कलरेशन हैपन्स ऑन योर फेस, ऑन योर हैंड्स एंड द एरिया अराउंड द ओपनिंग ऑफ द बॉडीज, लाइक योर आईज, योर ईयर एंड नोज. It's very difficult to determine कि how your vitiligo will progress. कभी कभी तो progress कभी कभी ऐसे होता है कि ये बगैर ट्रीटमेंट के ही सही हो जाता है, कभी कभी it just spread so quickly, एकदम से फैल जाता है, और कभी कभी होता ही नहीं है, खुद ही रुक जाता है.
एक पैच है बस, वही पैच और वही पैच चलेगा। तो बहुत मुश्किल है टू डिटरमिन करना कि आपका डिजीज ये वाला विटिलिगो किस तरह प्रिडिक्ट करेगा, बहुत मुश्किल है इसको प्रिडिक्ट करना। ना बारी आती है डायग्नोसिस की एंड ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं, दे आस्क अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री एंड देन इट डिपेंड्स कौन सा स्किन इन्वॉल्व है, कितना स्किन इन्वॉल्व है, कौन से एरिया का स्किन इन्वॉल्व है, एंड आपका डिजीज़ का प्रोग्रेस कैसे है, क्या वो स्लो है, क्या वो प्रोग्रेसिव है। तो इट ऑल डिपेंड्स एंड देन they will evaluate your condition by tests like एंटी न्यूक्लियर बॉडी टेस्ट कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट्स देखेंगे, आपका स्किन बायोप्सी भी होगी, और उसके बाद वी लुक इनटू योर ट्रीटमेंट के क्या करना है। अब ट्रीटमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एज कि आपकी एज क्या है, कितना स्किन इन्वॉल्व है, कौन सी जगह का स्किन इन्वॉल्व है, एंड आपका स्किन ये जो डिजीज़ है ये कितना प्रोग्रेसिव है, एंड देन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट कि क्या करना है आगे। पहले ज़रूरी नहीं है, दे आर मेडिकेशंस एंड स्किन बेस्ड थेरेपीज़ होती है जिसमें लाइट बेस्ड थेरेपीज़ होती है, स्किन के लिए बनी होती है। वी गो ऑल इन अ कॉम्बो। ज़रूरी नहीं कि हम एक ट्रीटमेंट को टारगेट करें, हम कॉम्बिनेशन में चलते हैं, बट हर किसी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सो इट्स बेटर पहले डॉक्टर आपसे बात करेगा कि आप सेल्फ टैनिंग प्रोडक्ट्स या मेकअप यूज कर ले टू कवर दैट एरिया आप, बट इफ स्टिल यू रियली वांट टू गो विद द ट्रीटमेंट देन द डॉक्टर हैज़ टू लुक इनटू इट, लाइक व्हाट टू डू, लाइक हाउ टू स्टार्ट, किधर से क्या लेके चले, लाइक शुड वी स्टार्ट विद द मेडिकेशन और द थेरेपी। सो दे लुक इनटू अ कॉम्बो। चले आपने ट्रीटमेंट कर लिया एंड थोड़ा बहुत कलर रिस्टोर भी हो गया, तो फिर हम लोग 100% गारंटी नहीं दे सकते कि रिलैप्स होगा या ये रुक जाएगा या प्रोग्रेशन नहीं होगी। सो इन सबको लेके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेडिकेशंस के ऊपर कि कौन सी मेडिकेशन अवेलेबल। वी हैव कैल्शियम इनहिबिटर्स दैट इफेक्ट योर इम्यून सिस्टम। उनके ऑइंटमेंट्स होते हैं जैसे कि टेक्टोलाइमस, पिम्कोलाइमस. These ointments we use it on the depigmented area, especially on the skin and face. It does help, but again, these FDA has, they say that there are side effects of these drugs. They are linked to prolonged use. They are linked to lipomas and cancerous problems also. So all medication will have side effects. We can't stop the pigment producing cell melanocyte to stop from not functioning or dying, but there are medicines that can restore some color in combination with light therapies. So जैसे कि corticosteroid है, if we apply it to the affected area, it might restore some color, but again it will take months to see the results, and plus there are side effects to the corticosteroid also. It will make your skin की thinning होगी, and you see these lines and streaks on it, and plus people who are with a larger body area involved हो, तो उसमें फिर हम लोग mild form use कर सकते हैं corticosteroids के. Again people who जिनका progressive हो, जो बहुत ज़्यादा progress कर रहा हो, तो we can also look into corticosteroid injection at the site. And बच्चे kids, and we use milder form of corticosteroid, and these are about corticosteroid. This is one option, but it will take several months to see the effect, and they have side effect as we discuss. If you're if medication has failed, phototherapy has failed, all of the options, there are no option for you, you can go with surgery में you have ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, वी डू इट फॉर पीपल जिनका विटिलिगो स्टेबल होता है एंड बहुत छोटे एरिया का होता है. सो वी टेक हेल्दी स्किन फ्रॉम अ पिगमेंटेड एरिया, फ्रॉम योर स्किन, हेल्दी वाला स्किन, एंड वी ग्राफ्टेड ऑन द डीपिगमेंटेड स्किन. But again, every surgery will have problems, and this we can do it on a very small areas of vitiligo. Plus, there will be side effects to the surgery also. You can have infection, you can have scarring, you can have cobblestone, you can have failure also, probably relapse ho jaye. And then we have blister grafting also. What do? We try to produce blister on your pigmented skin, आपकी normal skin, with a suction, and then we remove the top of that blister and we try to graft it on your depigmented skin. Okay? But again, the same problems.
और ये भी बहुत छोटे जो स्मॉल हिस्से होते हैं विटिलिगो के, उन पे ही हो सकता है। प्लस अगेन यू कैन हैव प्रॉब्लम लाइक स्कारिंग, इन्फेक्शन, कॉबलस्टोन प्रॉब्लम्स। प्लस वो जो हमने सक्शन की होती है प्रॉबली उसकी वजह से क्या पता विटिलिगो का नया पैच बन जाए। सो we use phototherapy with narrow band UVB light. With that आप almost stop कर सकते हो and it slows down the progress of vitiligo. But again it's more effective if you use it with corticosteroid और calcium inhibitors के साथ लेके चलो तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। 2 or 3 times again you have to go do the therapy 2 or 3 times a week and it will take 1 to 3 months चलता रहेगा। and अगर आपको full result देखना है तो it will take around 6 months to see the full effect. But again keeping in your mind FDA has given warning of calcium inhibitor use करने का, it's linked to skin cancers and all of that. So when you sit with your doctor तो प्लान बनाइएगा and उनसे पूछिए बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है एंड कैसे लेके चलना है, बिकॉज सब लेके चलें साथ में, नहीं कि एक चीज़ करो और बाद में दूसरा प्रॉब्लम हो जाए। अगर आपको डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम है, बार बार नहीं जा सकते, तो हैंडमेड डिवाइसेस भी आते हैं जो घर के लिए यूज़ के लिए बनते हैं। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, शायद उनको पता होगा। सो यू हैव दीज हैंड हेल्ड फोटोथेरेपी डिवाइसेस यू कैन यूज़ इट होम ऑल्सो। फोटोथेरेपी यूज़ करने का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, आपको बर्निंग, रेडनेस और इचिंग फील होगी, और वो जो फ्यू आवर्स जब आप ट्रीटमेंट कर लो उसके कुछ घंटों के बाद सही हो जाती है। बट अगेन इट्स बेटर डॉक्टर के साथ बैठे और अपना प्लान डिस्कस करें कि कौन सा क्या करना है। ऐसे ही प्लान बनोएगा तो काम होगा, नहीं कॉम्बिनेशन में चलिए। We also have Sorilin, combining Sorilin with photolight therapy. So this therapy includes you take Sorilin, which is a substance, it's a plant-derived substance, and it's called chemophototherapy also. So you either take it by mouth or या skin पे, affected skin पे लगाते हैं, and then you're exposed to UVA band वाला light. As it is more effective, it tries to bring the color to light patches, ठीक है, कलर को लाइट पैचेस लाने की कोशिश करता है, एंड प्लस इट्स वेरी इफेक्टिव बट इट्स वेरी हार्ड टू एडमिनिस्टर। सो मोस्टली लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं एंड UVA की जगह UVB यूज करते हैं। So what do we do in this therapy? We do it for patient जिनमें विटिलिगो वाइड स्प्रेड होता है और सारे ऑप्शन फेल्स हो जाते हैं, तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, वी गिव अ एजेंट जो आप इफेक्टेड नॉट इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करते हो, जिस पे विटिलिगो नहीं हो, आपकी नॉर्मल स्किन हो, उस पे अप्लाई करते हो। उसकी वजह से उस एरिया का कलर भी लाइट होता जाता है एंड इट इज़ टू मैच द डिसकलर्ड एरिया। सो टाइम के साथ you have to do it once or twice a day for 9 months and it will become उससे जो आपका डीपिगमेंटेड एरिया है उसी की तरह आपका रेस्ट ऑफ द एरिया का कलर भी बन जाएगा, तो वो ब्लेंड करेगा। नाउ ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इट कैन कॉज ड्राइनेस, इचिंग, बर्निंग, swelling, but this is permanent. So depigmentation is permanent. Pigmented cell, and we take the cells and put it in a solution, and then we apply it back to the prepared affected area. The restoration, this is called repigmented restoration. This will take 4 to weeks. 4 weeks where you can start seeing the color is being restored, but again you will see the side effects are there, like scarring, हो सकता है स्कारिंग हो, इन्फेक्शन हो, और अगेन इवन स्किन टोन हो। देयर आर स्टडीज दैट इंक्लूड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। उसमें है देयर इज वी स्टडिंग ऑन अ ड्रग दैट स्टिमुलेट मेलानोसाइट, ठीक है, वी इम्प्लांट दिस ड्रग अंडर योर स्किन and then it try to restore melanocyte in that affected area. There is another drug like prostaglandin that also restores skin color, and then it comes into gel form. You have to apply to the area which is affected, and it tries to restore skin color. So these are all the treatments that we have, and you can explore them, but you have to sit with your doctor and come up with a plan. So you don't खुद से नहीं बैठ के पढ़ लिया, सुन लिया and you start treating yourself. No, you have to go to your doctor and they will plan it for you how to take it from there. I hope this help. अगर कुछ और पूछना है तो please comment, email or write to me and I'll reply back. I hope
दिस हेल्प द पीपल हु आर आस्किंग मी क्वेश्चन. अगर कुछ और पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए. अल्लाह हाफिज़.